Now part number 10 of question number 5, that is 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A is equal to 1 minus tan A upon 1 minus cot A ka whole square is equal to tan square A. Okay. Now in this question what we will do, firstly we will prove this part is equal to tan square A, and then in second shift we will prove this one is equal to tan square A. Okay. Now firstly prove this part is equal to tan square A, that is left hand side is equal to 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A. Okay. Now 1 plus tan square A is equal to secant square A, and 1 plus cot square is equal to cosecant square A. Okay. Now secant, we know that it is equal to 1 upon cos A ka square. We can write it as like this, or whole square भी हम लोग देख सकते हैं. And secant is equal to 1 upon sin square का A का. Okay. Now we can write it as 1 upon cos square A multiply by sin square A upon 1. It will become sin square A upon cos square A, and this is equal to tan square A, that is equal to right hand side. Okay, I will explain you again. This is 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A, and 1 plus tan square A is equal to secant square A, and 1 plus cot square is equal to cosecant square A. Secant is equal to 1 upon cos, so we can write it as 1 upon cos square A, and cosecant is equal to 1 upon sine, and we have written here as 1 minus sine square A. Okay. Now this is the numerator multiplied by the denominator. Okay. Dividing this, it will become sine square A upon cos square A is equal to tan square A is equal to RHS. Okay. Now this center term, that is now 1 minus tan A upon 1 minus cot A ka whole square. Okay. Now can we write tan 1 minus sin A upon cos A? Okay. And in the numerator it is cot. We can write it as cos A upon sin A ka whole square. Okay. Now taking LCM in the numerator, that is equal to cos A upon cos A minus sin A. यही बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके. Similarly in the denominator, sin A minus cos A upon sin A का whole square. Square चलेगा ही चलेगा साथ में. Okay. Now numerator and denominator, how we can write it? How we can write it? We can write it as cos A minus sin A upon cos A. This is your numerator, then multiply, then denominator will become converse, that is sin A upon sin A minus cos A, and the whole square is there. Okay. Now the term is, we can cancel this one, but there is a difference of minus. There is a difference of, it is cos A minus sin A, and it is sin A minus cos A. Can we converse it and take minus at common? माइनस कॉमन ले लिया और इधर लिख देंगे साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए. रेस्ट विल बिकम सेम, बाकी टर्म सेम रहेंगी.
साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ओके, इसको मैंने क्या किया, कन्वर्स करके लिख दिया और माइनस कॉमन ले लिया। अब आप ज़रा इसकी ब्रैकेट खोल के देखिए, अगर मैं इसकी ब्रैकेट खोलती हूँ इट बिकम माइनस साइन ए एंड प्लस कॉस ए। सेम, cos is plus and sin is minus. So by taking minus at a common, ये इस चीज को कोई फर्क नहीं करता, ठीक है, बट दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ वी कैन कैंसल दिस विद दिस, वी आर लेफ्ट विद माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू माइनस tan ए का स्क्वायर, ठीक है। बट अब आप बोलोगे ये माइनस है, हमें तो tan स्क्वायर ए चाहिए, बट जब स्क्वायर होता है तो माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल, माइनस जो होगा वो प्लस बन जाएगा। सो व्हेन वी ओपन दिस ब्रैकेट वी विल टेक इट एज tan स्क्वायर ए एंड दिस इज इक्वल टू अवर right hand side and hence this is our proof. I will explain you again. This is 1 plus tan a upon 1 minus cot a ka whole square. We have taken tan as sin a upon cos a and cot as cos a upon sin a. Now we have taken the LCM here. It become cos a minus sin a upon cos a. Similarly in the denominator it becomes sin a minus cos a upon sin a, okay, का whole square is there. Now cos a minus sin a upon cos a multiply by sin a upon sin a minus cos a. जब हमने न्यूमिनेटर को इसके बिल्कुल सामने ले आए तो साइन वो डिवाइड हो रहा था, फिर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये देन ये कन्वर्स हो जाता है। ओके, नाउ इन दोनों को सेम करने के लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, इट इज साइन ए माइनस कॉस ए एंड दिस इज ऑलरेडी साइन ए माइनस कॉस ए, इट विल बिकम कैंसल, वी आर लेफ्ट विद माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर एंड इट इज माइनस टैन ए का स्क्वायर एंड इट इज टैन स्क्वायर ए एंड हेंस दिस इज अवर प्रूफ।